Assalamualaikum everyone, this is your host खुशबू अली and you are watching ZABFM Digital। और आज हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं जो कि दोनों बायोटेक से ताल्लुक रखती हैं। So we are presenting you the ambassadors of WWF and we have Samia Ali and Ariba Khan with us. So Samia, tell us something about yourself. Basically, I am a biotech student studying in SZABIST, and we are in fifth semester. Okay. And I'm just like I came from an O levels background, so it was quite difficult for me to make friends, and also that I'm an introvert, so कम बातचीत करना और ये सब। तो शुरू में तो लाइक आई वाज लाइक कि नहीं कुछ भी नहीं होगा मुझसे, लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी गुजारनी है। बट देन व्हेन आई मेट माय फ्रेंड्स एंड सबको मैंने जब हम लोग की कम्युनिकेशन हुई और फ्रेंडशिप हुई तो उससे फिर हम लोग मेरी बातचीत शुरू हुई एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग इन क्लास और यही मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। That's great. So how did you decide to go for biotech? एक्चुअली आई अप्लाइड फॉर MCAT के लिए एंड उस दौरान एक कोविड भी था एंड उसमें PMC से भी इश्यूज आ रहे थे, हमारे पेपर्स डिले हुए, इस वजह से फिर मेरा नहीं हो सका। देन आई ऑल्सो लाइक ऑन लाइक मैंने साइट पे और भी लाइक फील्ड्स चूज करके रखी थी अपने लिए। वन वाज साइकोलॉजी एंड अदर वाज फिजियोथेरेपी and pharmacy and one was biotech as well. So ये मेरे इसमें लिस्ट में थी कि मुझे अगर MBBS या BDS में नहीं होता so ये मैंने चूज करना है। So that's how I came into biotech कि मुझे ज़्यादा मतलब ये फील्ड में उसका कोविड भी था तो वैक्सीन वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा था। So I found it a really interesting field at that time. So फिर मुझे लगा कि फिर फिजियोथेरेपी में भी लोग जा ही रहे थे, फार्मेसी में भी थे, तो मैंने बोला व्हाई नॉट जॉइन बायोटेक्नोलॉजी। और फिर फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसने बायोटेक किया हुआ हो। सो दैट्स हाउ आई decided. That's really interesting. So Ariba Khan, you tell us. My life has been pretty much the same. लेकिन I'm from like metric के background से starting से लेके end तक I did intermediate metric। फिर ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी लड़की की तरह आई वेंट फॉर MCAT और जब MCAT में नहीं आपका हो सका नहीं हुआ देन इन लाइक आई टुक एडमिशन इन ज़ियाउद्दीन फर्स्ट। आई वेंट फॉर बायोटेक डेफिनेटली क्योंकि मुझे 12th में एक चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी। आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड बाय दैट एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो कि हाउ लाइक फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट DNA हम जो है बाकी चीज़ें बना सकते हैं थ्रू बैक्टीरिया, ह्यूमन के लिए हम चीज़ें निकाल सकते हैं एंड उसकी वजह से ना आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी फील्ड है कर लेते हैं बायोटेक, इतना ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है बायोटेक का और एक्सप्लोर करना चाहिए। सो ऑल्सो आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट No, it's okay. हमारी फैमिली में एक लाइक अ काइंड ऑफ करियर गाइडेंस के लिए देयर आर सम पीपल लाइक करते हैं, अच्छी गाइडेंस करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसी फील्ड पे जाओ जो कि लाइक जहाँ पर कम लोग गए हुए हों। वहाँ कंपटीशन भी कम कंपटीशन होता है, तो इस वजह से देन आई चोज बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि साइकोलॉजी ये सब मतलब थे कजिन्स हैं कर रहे हैं तो नॉर्म आजकल का है, हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, ये तो है। So it's definitely हर more बच्चे के लिए interesting. यही होता है, या तो आपने इंजीनियरिंग में करना है या तो आपने उसमें करना है, मेडिकल में जाना है या तो फिर आपने LLB करनी है। Exactly. इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने एक बिल्कुल न्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो वैसे मुझे भी बिल्कुल बायोटेक के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कुछ बताना चाहिए। हाँ, मैंने एडमिशन लिया ज़ियाउद्दीन में बट एक्चुअली दैट वाज इन नाज़िमाबाद। तो लाइक मुझे बहुत मुश्किल होती थी आने जाने में, दूर है काफ़ी मेरे घर से, तो फिर मैंने ज़ैबिस्ट में ट्रांसफ़र कर लिया। और ज़ैबिस्ट में आने से पहले आई वाज रियली वरिड कि यहाँ पे लोगों का और मेरा माइंडसेट मैच नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था, आई डोंट नो, प्रोबेबली बिकॉज ऐसा एक होता है कि ज़ैबिस्ट में देयर आर ओह माय गॉड सो मेनी बर्गर्स और हर चीज नॉट लाइक दैट एट ऑल। यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं और आई मेट माय फ्रेंड्स यहाँ पे और वी आर हैविंग लाइक अ ब्लास्ट फॉर द पास्ट 2 years राइट नाउ। तो ओवरऑल ज़ैबिस्ट पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट इज रियली गुड। तो खैर आई जस्ट केम टू ज़ैबिस्ट और फिर कुछ सेमेस्टर्स के लिए आई टुक सीनियर्स के साथ आधी क्लासेस अपनी बैच के साथ। फिर मुझे खैर अपने बैचमेट्स के साथ मजा आने लगा, मैं बोला नहीं यार अच्छे हो गए ये, डेफिनेटली इनके साथ जो है और करना चाहिए। फिर मैंने खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप कर दिए बाकी सबके साथ सब्जेक्ट्स और फिर मैंने अपने लाइक बैच के साथ ही प्रॉपर एक
सारे सब्जेक्ट्स Yeah. हमने लेने शुरू कर दिए so that we can graduate बिल्कुल। together. तभी तो समिया आप बताएं आपका ऐसे क्या फर्स्ट जो थी जो आपने आपको बोला कि हाँ भाई ज़ैबिस्ट में मैंने करना है यहाँ पे ज़ाबिस्ट में एक्चुअली मैंने भी लाइक ज़ाउदी में भी अप्लाई किया था, टेस्ट अच्छा। किया था मैंने। तो ये And वो लाइक क्लासमेट no, 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 no. no. I just left the seat क्योंकि मैंने जब वहाँ का जाके एनवायरनमेंट देखा, कैंपस भी छोटा था और उस तरीके का मुझे एनवायरनमेंट जैसे मुझे चाहिए था, that was not there. So Not फिर very diverse. डाइवर्स Yeah, I नहीं can था। say that. और फिर अब मुझे न्यूज में मिला, अब जब मैं सुनती हूँ ना तो वो लोग शायद आउट ऑफ सिटी उनका कोई कैंपस है तो वहाँ ले गए हैं बायोटेक को। सो आई फील काइंड ऑफ लकी दैट आई केम टू ज़ैबिस्ट और मैंने ज़ैबिस्ट हफ्ते में 2 days we have to go to the link road for the lab, so it was very much hectic for me. नाज़िमाबाद जाओ पहले, वहाँ से then link road जाओ, तो it was not adding up. और फिर ज़ैबिस्ट का एनवायरनमेंट मैंने जब देखा विद इन द सिटी है और एरिया बहुत सिक्योर्ड है बिल्कुल। और यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली माहौल है और प्रोफेसर्स का मैंने सुना था कि फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो दैट वाज द चॉइस, दैट इज व्हाई हमारे प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर हमाद, ही इज सो हेल्पफुल, Yes, मतलब जो very much. दुआएं निकलती हैं उनके लिए, कोई भी इशू होता है। आई वाज अ ट्रांसफर स्टूडेंट, बहुत सारे इश्यूज थे मेरे, लेकिन सर हमाद ने इतनी हेल्प की, इतने पोलाइटली सर ने इतनी आसानी से सब कुछ हम करवा के दिया। दैट वाज वेरी मच लाइक, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको कि लाइक टीचर्स एक्चुअली केयर और वो हेल्प करते हैं प्रॉपर्ली। या बिल्कुल, मैंने भी जितने भी टीचर्स देखे हैं यहाँ पे, दे एक्चुअली केयर फॉर यू। वो ये इस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज को प्रेफर करते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक दूसरे इंस्टीट्यूट्स में इतना नहीं होता। और वहाँ पे ये होता है कि पढ़ाओ और चले जाओ। हाँ, और स्पेशली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बिकॉज आई सॉ जिना, आई सॉ लाइक डाउ और ये सब वहाँ नहीं होता इतना। और फिर यहाँ की क्लासेस मतलब बहुत अच्छी तरीके का लाइक एनवायरनमेंट है यहाँ पर। सो इट फील्स लाइक अ होम, लाइक सेकंड होम है ज़ैबिस्ट सब हमारे लिए। दैट्स ग्रेट। तो आप WWF के बारे में कुछ बताएं। WWF का मुझे सीनियर से ही पता चला था, लाइक इट वाज एन इको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो मैंने लास्ट ईयर किया था। तो मेरे साथ अरीबा भी थी और एक और फ्रेंड भी थी जो कि बायोसाइंसेज में। सो वी डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर और हमारा 3 का ग्रुप था। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें हमें प्रोजेक्ट मिला था, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट था उसमें, और कुछ हम लोग को अटेंड करने थे सेशंस, ऑनलाइन सेशंस थे। तो वो मैंने अटेंड किए। उसके बाद फिर वी गॉट द सर्टिफिकेट एंड द लेटर, अप्रिसिएशन लेटर मिला हमें। तो देन आवर सीनियर टोल्ड मी कि एक एम्बेसडर प्रोग्राम आ रहा है WWF का। सो आई सेड कि व्हाई नॉट, वी शुड अप्लाई फॉर इट। तो हम तीनों ने ही अप्लाई किया साथ में। तो फिर उसमें से मेरा नाम आ गया, लाइक मुझे ईमेल मिल गई। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन WWF. So Ariba is not in WWF? Basically I am the ambassador, campus ambassador, and there's only one ambassador. I did the internship with you did the internship. Okay, that's great. हमें कुछ अलग करना चाहिए वैसे। Yes, definitely. तो जितनी हम चीजें ट्राई करेंगे उतनी हमें और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट लोगों के साथ। That's great. तो इसके लिए अगर हम आपसे पूछें कि WWF में अप्लाई करने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप क्या बताएंगे? आई थिंक देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वो उनका एक आप उनको फॉलो करें, उनकी पेज पे आते हैं जब उनका एक टाइम पीरियड होता है, जब हाँ रिक्रूटिंग, तो वो आप कर ले, कोई भी कर सकता है इजीली। That's great. ये तो बहुत अच्छा है। मतलब इंसान अपने सीवी में ये ऐड कर सकता है कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप की है, and that's really like easy. Isaac और WWF, like students को हम बहुत ज्यादा कहेंगे कि always do go for these type of things, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आपकी skills, quality और पॉलिश करते हैं, डेवलप करते हैं, तो it helps you a lot professionally later. Also KDSP में हम लोग ने किया 2 दफा। मैंने सोसाइटीज के थ्रू, ज़ैबिस्ट की सोसाइटीज के थ्रू हमें पता चला KDSP का कार्निवल होता है। देन फिर मैंने 2 दफा, मैंने अभी लास्ट ईयर भी किया है, 2022 में भी किया, 2021 में भी किया मैंने। सो उसमें भी बहुत काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, गॉट टू इंटरेक्ट विद द स्पेशल चिल्ड्रंस। तो वो बहुत अच्छा था। फैमिलीज आती है वहाँ पर, डाउन सिंड्रोम जो होता है, तो वो काफी बहुत अच्छा, वो तो लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। सो you get to see a new life. We were there from like 9 in the morning. Yeah, we were from 9, 10 in the morning, from like
10 in the evening, रात के 10 बजे तक we were there, हर चीज हमने करनी थी और दिल भी नहीं कर रहा था कि जाने का, हाँ, बिकॉज एक कंप्लीटली न्यू चीज थी ना, चीज थी। और लाइक Yeah. आपको बहुत खुशी होती है when you help special kids, उनकी I know, जब बिल्कुल। So Family I come family from the है। background of psychology, so I know कैसा होता है। और वहाँ इंसान काफी आसानी से कह देता है कि यार तुम तो पागल हो, यार तुम तो ये हो। जब हम रियलिटी में वो सब चीजें देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार कितने हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें कितना कुछ मिला हुआ है, और कितने सारे बच्चे हैं जो कि इन सब चीजों से महरूम हैं। So that's really great। आप लोगों को एक अंदर से ग्रेटिट्यूड भी पैदा हुआ होगा और बहुत अच्छा फील होता है कि हम देखते हैं यार ऐसे भी लोग होते हैं। तो या अच्छा, बायोटेक के बारे में अगर आप बताएं तो आप लोगों ने बायोटेक में आज तक क्या क्या किया है? लाइक उसमें आपने कोई ऐसी जगह पे इंटर्नशिप की हो जहाँ पे बायोटेक को आपने इस्तेमाल किया? एक्चुअली वी वेंट फॉर अ लैब टूर इन लियाकत में, हमें लेके गए थे अभी रिसेंट लास्ट सेमेस्टर में। और हमारे एक हमारे इकोलॉजी के सर ने हमें प्रोजेक्ट दिया था जिसमें हम लोग का बाहर से थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था। इट वाज प्लांट्स, हमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कलेक्ट करने थे। इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले अभी, क्योंकि हमारा लाइक इट्स जस्ट द स्टार्टिंग, 5th सेमेस्टर हमारा शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो अब आगे in the third year right Third now, the year. internship we'll be doing next year इंशाल्लाह। उससे पहले बिल्कुल। we तो weren't अभी really इतना कुछ नहीं हमारा doing एक्सपोजर internship। हुआ, बट छोटे छोटे ये चीजें हुई हैं जैसे लेबोरेटरीज के हाँ, टूर। या went to स्टिल laboratory एक tours। आइडिया हो गया है कि आपको आगे क्या Yes, आने वाला है। So that's great। तो आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि आपके लॉन्ग टर्म में क्या इरादे हैं? लाइक बायोटेक को ही कंटिन्यू करना है आपने या फिर कुछ और परस्यू करेंगे? मेरा तो है कि आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर लाइक स्टडिंग मास्टर्स की उसमें, लाइक टुवर्ड्स द For जीन biotech? थेरेपी, यस अच्छा। फॉर जीन थेरेपी और या जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ। That's So great। that's what I'm thinking अभी। अब आगे का नहीं पता, मे बी आई फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में ही रहना है। एंड व्हाट अबाउट यू अरीबा? For me too, मुझे भी masters का initially I want to go to the Switzerland या फिर Korea for like masters, and I want to do in like research in like stem cells या फिर gene therapy। That's great। तो So have you like studies के वहाँ पे क्या होता है? Like in ZABIST you are very free to do everything। तो वहाँ पे like आपका क्या ऐसे कोई आपने स्टडी की है कि वहाँ कैसा होता है? like the Biotech country के बारे I'm में? interested in वहाँ पे? Yeah, exactly। हाँ, definitely Switzerland and like South Korea की जो है ना biotech industries are like going really good। और उन्होंने like vaccines develop करी हैं अपनी, और उनकी vaccines बहुत अच्छी हैं। बायोटेक की जो इंडस्ट्री है वो recent जब से कोविड आया उसके बाद से बहुत अच्छी जा रही है हर जगह, क्योंकि हर developed country जो है वो अपनी वैक्सीन्स बना रही हैं और लगातार like everyone is working researching और हर चीज, इसलिए so I think these two countries are suitable। I'm interested also। Also हमारे प्रोफेसर अभी हमें एक कोर्स के मिले हैं, so he came from Switzerland। So he was saying कि वहाँ का काफी अच्छा एनवायरनमेंट है और वहाँ लोग काफी वर्क कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। So that is so you have the first hand experience उनका सुना हुआ। we have a lot of teachers that have I have also heard about Germany too, because Germany में free of cost है education। बिल्कुल। और वहाँ पे फैसिलिटेट बहुत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स। but there is a drawback, German language आपको सीखनी पड़ती है and that's literally very difficult। Yeah, I don't want to learn I think German it's the language। most difficult। Yeah, इसलिए I really don't want to learn German language। Like if we talk about Pakistan तो यहाँ पे हमें पश्तो मुश्किल लगती है, और वहाँ पे हम देखें तो it's German। But for students who are aiming to go, वो कर लेते हैं। बिल्कुल, जिसको करना है तो वो फिर कर लेते हैं, कुछ भी हो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। That's nice। So tell me about yourself in ZABIST। Like what change you have seen yourself after joining ZABIST? I can say that। अच्छा, so like before joining ZABIST and after joining ZABIST, what was the change? Before joining ZABIST, I was totally an introvert। Okay। Totally an introvert। right So on the range of 1 to 10, how much would you rate yourself? solid 8.5। Yeah, she's right। Okay। So and after literally joining like ZABIST? I only have like hardly I have 2 to 3 friends in college जो मेरे best friends बने थे। Because everyone came from a different school। हम और मसला ये था, मैंने DHS से किया हुआ है phase 8 में जो है। I'm also from okay, me too। So सारे all of us के students एक क्लास में होते थे, and they were from different schools, so सबके अपने अपने groups होते थे। So that's how हम लोग करते।
हम जैसे क्लास में एंटर होते थे पहले से ग्रुप्स बने हुए थे, आई वुड बी कंफ्यूज कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो हुआ, फिर मसा ये हुआ कि हम जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो कोविड आ गया, तो पेपर्स इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ कॉलेज में, और ना इतने मेरे कोई अच्छे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं अभी भी, बट इतने क्लोज नहीं है। बट व्हेन आई केम टू ज़ैबिस्ट, मतलब यहाँ का तो अलग ही लाइक एनवायरनमेंट था। आपको अपने आप को लाइक स्टैंड आउट करना है दूसरों में, यू हैव टू स्पीक आउट, और आपको फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी डेफिनेटली यू शुड हैव सम फन, इसके बाद तो आपका टाइम तो फिर मैंने बोला कि ये लास्ट ईयर ऑफ काइंड ऑफ बैचलर्स जो होता है, मतलब एक ऐसी लाइफ है बिफोर प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो फिर मैंने बोला कि आई हैव टू फ्रीडम लाइक लिटरली बैचलर। या और फिर आपका फ्रेंड्स का सर्कल भी डिपेंड करता है। मुझे एक ऐसे फ्रेंड्स मिले, लाइवली फ्रेंड्स मिले हैं, और मतलब काइंड ऑफ मुझे इस चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपनी ये जो इंट्रोवर्ट चीज है फिर वो मैंने worked on it. That's great. So Ariba, what about you? What are your extracurricular activities in ZABFM? I have always been like super extroverted. हर जगह इतने दोस्त I can see that. So you're completely different. You both are. So basically, I am an extrovert, and there is another one. There is another friend that didn't came. She's in the middle range. Yeah. She's also just like me. She's introvert, लेकिन so I adopted them both. So that's the thing. और हम फिर मैं उनको करती हूँ, प्रेशर करती हूँ, ये करो ये करो ये करो, और फिर एक मदर वाली I told actually Rimsha is more of a mother. She knows what she's doing and everything, and I just tell them to do stupid things with me ताकि they should also enjoy. तो हम बस कुछ कर लेते हैं, we find a balance. अच्छा, अब मुझे ये होता है like sometimes I feel like नहीं, we don't have to miss the class, we have to go on time, but she is like no यार अभी हमारे 2 years है, चले जाएंगे, so that's how we. नहीं, हम क्लास अक्सर we are good student, हम हमेशा क्लास टाइम में जाते हैं, but sometimes कि यार थोड़ा ठहर जाओ, कुछ तो कर रहे हैं, हम कर लेते हैं अपना, तो चले जाएंगे। जहाँ पे हम लोग को लगता है कि जो लेक्चर लाइक इम्पोर्टेंट है, सो वी टेक इट सीरियसली। जहाँ पे obviously हम आए ही यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। हाई जी पे लेकिन यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, not to brag, लेकिन that's great. We are hard working. That's great. So उसके अलावा like friends के साथ outing वगैरह आपका कुछ क्या? साथ हम बहुत घूमने जाते हैं, हम चले जाते हैं whenever we have a free time, कोई दोस्त गाड़ी ले आए, हम लोग घूमने चले जाते हैं। That's nice. So that's how it is. अभी खैर मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो I don't have इतना टाइम भी, मुझे तो अभी से बहुत कुछ हेक्टिक लग रहा है। Actually ZABFM की ना टाइमिंग बहुत अच्छी है और तो हम लोग के पास लाइक यूजुअली यूनिवर्सिटी सुबह 8 से 4 तक, लेकिन हमारी क्लासेस की टाइमिंग बहुत डिफरेंट होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। एक्चुअली पूरे दिन में एक क्लास होगी 3-4 घंटे की, देन वी हैव टाइम, तो हम लाइक 2 क्लासेस के बीच में भी देयर इज लाइक सफिशिएंट ब्रेक, so we just go and hang out, have fun, go on lunches, also go to the beach. कि ज़ैबिस्ट की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल सेंटर में हर चीज आपको करीब अवेलेबल है। हाँ, कुछ नहीं तो ओशन मॉल चले जाओ, मूवी देख के आ जाओ। हाँ बिल्कुल, तो हम चले जाते हैं। That is. So tell me if you are in SSC or any society. Yes, last year I was HR director for ZABFM Biosciences Society, and I also worked as a social media assistant director in Lions Club. So that was. You are an introvert and you have done so much work. Actually, I wanted to improve this thing. That is why I came into society. Socializing basically. Yeah, socializing में improve करना था मुझे, friend circle बनाना था, तो that is why. That's nice. And what about you? I was like a social media director in Bioscience Society, and this year I'm like general secretary in Lions Club. Okay. So I'm like active still. So are you planning to join any society in future or something? Last year अब हमारा होगा, next year it would be busy. So अब I don't think so कि we should join, क्योंकि we will have like final year project होगा, तो उस पे definitely focus करना पड़ेगा। Okay, so I wanted to tell you something कि मैंने SSC में अप्लाई किया था फॉर प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और आई वाज सिलेक्टेड फॉर इट, बट मेरा ये था कि हम लोग का इट वाज अ वोटिंग थिंग, सो उसमें जो सीनियर थी शी गॉट मोर वोट्स देन मी, she won by 3 votes only. Yeah, so only 3 votes. Yeah,
So it was a close competition, but इससे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. Like I went to like different classes में जाके मैंने अपनी campaigning की, जो कि मुझे like confidence मिला मुझे. और क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, मैं बिल्कुल low confidence था. मैं ऐसे like even in class presentation के वक्त तो मुझे anxiety strike करती है. So वो चीज़ now we are not, as you have improved a lot. So वो चीज़ भी overcome हुई through the campaigning thing. तो that was my one of my like life का ऐसा experience था जो कि achievement. It is. आपका अगर वैसे मैं आपसे पूछूं तो किसी सोसाइटी में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो तो what was it? मैं अगर कहूँ तो मेरा like I was very much interested in performing arts society क्योंकि I like to sing a lot. Oh. So you can ask her to sing few lines. I'm not sure if I good. अभी लेकिन like if it's related, it's not related to that. So फिर हाँ मुझे उसमें करना था, but unfortunately I didn't get the chance कि मैं करूँ. Okay. So what was the consequences? Why? Because like मैंने एक दूसरी सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी लायंस क्लब में. आई वाज वेटिंग फॉर देयर लाइक रिक्रूटमेंट कि उनकी ईसी की खुल जाए, लेकिन उससे पहले फिर मैंने लायंस क्लब ज्वाइन कर लिया और फिर मैं वहाँ हो गया मेरा सिलेक्शन. तो फिर इसलिए. So what about you, Samia? मेरा बस यही था कि आई गॉट the experience from two societies. So आगे फिर मैंने बोला कि like WWF का भी मेरा सिलेक्शन हो गया. So I thought कि अभी why not, because SSC में भी मुझे अब जाना था SSC में. So मेरा यही था कि अब मुझे होना है तो अब लास्ट ईयर में होगा. मे बी if आई एम अवेलेबल, अगर मेरा वो ना हो, इतना बिजी स्केड्यूल ना हो, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होता है. सो मे बी आई अगेन अप्लाई फॉर SSC. तो मेरा ये इंशाल्लाह वही टाइम शेड्यूल पे भी डिपेंड करता है. अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की तो आप मतलब कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल प्रायोरिटाइज हमें स्टडीज को ही करना है क्योंकि वही हम करने आए हैं. तो that's nice. So tell me something about your subjects. Like biotech में कौन से subjects होते हैं? So basically we have studied microbiology, organic chemistry, inorganic chemistry, and biochemistry, mathematics, basic like it was, and what was else? Genomics, the study of genes and their structure, functions of genomics genes. और molecular biology. So what was your favorite subject? If we start from Samia. My favorite subject was basically chemistry, physical chemistry and inorganic chemistry. क्योंकि like उसमें like मेरा था कि I have like my hands on chemistry ना. तो एक और चीज़, the instructor, she was very nice. Dr. Probably one of our favorite teachers. Yes. Dr. Mariam, very sweet, very helpful. अगर आपकी इंस्ट्रक्टर अच्छी है तो आपको सब्जेक्ट भी उन्होंने सब्जेक्ट इस तरह से she taught us कि हमें मसला ही नहीं हुआ कोई किसी चीज में भी ग्रास्प करने में कोई भी. Molecular biology की नाम नेहा, she was also very sweet. So वो उनसे भी like हमारा molecular में भी मेरा काफी इंटरेस्ट था, like उसका भी अच्छा रहा. And Ariba, you? It's the same as hers, like physical chemistry, inorganic chemistry, and then molecular. Because it's definitely because of the instructors. Or there was like another subject, biochemistry. The subject was really hard, लेकिन जो instructor है, she was very nice. So she's also very nice and very helpful. So definitely सारे teachers ही हमें बहुत अच्छे मिले. That's really nice. You got lucky. Alhamdulillah. Chale, thank you so much for coming, Ariba and Samia. It was really nice having you. और मुझे बहुत कुछ नया पता चला बायोटेक के बारे में. Literally, I had no idea about biotech. और बिल्कुल हमारे viewers को भी बिल्कुल कोई idea अगर ना होगा तो आपकी इंटरव्यू से बहुत कुछ पता चल गया होगा. So we'll be in touch with you. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much.